Hello students, am I audible to all of you? Hello students. Students, quickly tell me in the chat right now if I'm audible and visible to all of you. Hello students, hello. Good evening all of you students. Hello students. Good evening all of you. Am I audible to all of you? Yellow everyone. Yellow. Am I audible? Nice students, nice. Now, students, first of all tell me what we'll be covering today. आज की क्लास में हम ना पॉलीफेरा कवर करेंगे, उसके बाद सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, तीन फाइलम आज की क्लास में हम कवर करेंगे, तीन फाइलम. स्टूडेंट्स, नाउ आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल एक्सप्लेनेशन. ये दो फाइलम है ना, स्टार्टिंग दो फाइलम पॉलीफेरा और एंड सीलेंट्रेटा एंड निडेरिया, व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट. उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे. उसके बाद जो लास्ट फाइलम है आज का, जो टीनोफोरा, उसमें उतना डिटेल की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा कम इंफॉर्मेशन है. Students, I will be teaching you, I'll be showing you a lot of diagrams to make you understand how beautiful they are. Okay, students. So, students, all of you ready? All of you ready, students? Can I get a thumbs up in the chat, or can I get a fire emoji? Can I get a hearts, or whatever you want? Drop in the chat, students. जल्दी से करो. उसके बाद वीडियो को लाइक भी करो. अभी क्या भी स्टूडेंट्स, ठीक है? तो स्टूडेंट चलो शुरू करते हैं अभी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. स्टूडेंट्स, लेट्स गो स्टूडेंट, लेट्स गो. नाउ स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था हमने. We learned about basics of classification. Yes or no? Students, do all of you remember? All of you remember, right? All of you remember we finished something called as basis of classification. वहां पर हमने पढ़ा था कि level of organization, we have cell level, tissue level, organ level and organ system level. उसके बाद हमने पढ़ा था symmetry. We learned about radial symmetry. Yes or no? Asymmetrical and bilateral symmetrical. Then we learned about germ layer. We learned about diploblastic, triploblastic. Okay. Then we learned about coelom, acoelom, pseudocoelom, yes or no, and eucoelom. Then we learned about segmentation, metameric segmentation in the case of Annelida. Then we learned about notochord. If notochord is present, chordata, generally have notochord. Okay. So ये हमने पहले क्लास में पढ़ा था हमने. And students, this is what we learned in the previous class. Now, if all of you see here, in the previous class, students, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में ना यही एग्जांपल्स आएंगे. एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही पूछेंगे. देखो, नाउ इफ यू रिमेंबर, सेलुलर लेवल में कौन सा था स्टूडेंट्स? सेलुलर लेवल में था पॉलीफेरा, हमने पढ़ा था. उसके बाद रेडियल के अंदर ये जो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं यहां पर, टीनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा, आल्सो कॉल्ड एज निडेरिया, रेडियल. बाइलैटरल के अंदर एसिलोमेट, उसके अंदर सीलोम ही नहीं है, प्लैटीहेलमिन्थस, which is also your organ system, organ level. Then with pseudocoelom is Aschelminthus, the roundworms, right? Then we have coelom, which has the cavity inside. Okay, cavity inside we have the Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata. That is your true coelom, students. So itna humne, we also can also write chordata also here. We have coelom, right, students? Do all of you have coelom? Yes or no? Students, do we have coelom? Yes or no, students? बताओ जल्दी स्टूडेंट्स. मैंने आपने बताया था ना पिछली क्लास में, what is coelom? Do all of you remember, right? Let's say this is our body. ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, ठीक है? This is our body right now. Yes or no? In our body, students, this is your outer body layer. Outer body layer. Do all of you remember the outer body layer? ठीक है? Outer body layer है ये. इस outer body layer के अंदर क्या है? यहां पर है हमारा माउथ, और दिस इज आवर एलिमेंट्री कैनाल, है ना? एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, यू सी एवरीथिंग एल्स हियर, स्टमक, एवरीथिंग. यस और नो? स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल. नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ है मीसोडर्म लेयर है. यहां पर अंदर की तरफ मीसोडर्म लेयर है, और यहां पर भी लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म से लाइनिंग है. नाउ व्हाटएवर यू सी ऑन द इनसाइड, स्टूडेंट्स, व्हाटएवर यू सी ऑन द इनसाइड, द कैविटी इनसाइड हियर, है ना? This cavity is called as coelom. The cavity inside is called as coelom. Now इसी coelom के अंदर हार्ट, लंग्स, किडनी, सब कुछ इस कैविटी के अंदर ही होते हैं. So we have coelom. ठीक है स्टूडेंट्स, we have the coelom right now. So हमारे अंदर ये coelom होता है. इतना याद रखो स्टूडेंट्स, काफी है. Now students, in today's class, now we'll be focusing on something called as porifera, students. Now students, students, how many of you seen porifera? Students, raise your hands. Students, याद रखो स्टूडेंट्स, राइट? स्टूडेंट्स सब लोग या हाथ रेस करो. हाउ मेनी ऑफ यू सीन पोरिफेरा इन रियल लाइफ?
क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स, आपने देखा क्या स्टूडेंट्स? हाउ मेनी ऑफ यू सीन पोरिफेरा इन रियल लाइफ? देखा है स्टूडेंट्स किसी ने? नहीं देखा? चिंता मत करो, एटलीस्ट आई विल शो यू फोटोज राइट नाउ. इस फोटोज को देख के थोड़ा याद मेमोरी में तो शार्प रहेगा. स्टूडेंट्स वी ऑलवेज लर्न व्हाट वी सी. अगर हमको कुछ दिख गया ना, इफ यू कैन सी समथिंग इट बिकम्स इंटरेस्टिंग टू लर्न. यस और नो स्टूडेंट्स? हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोरिफेरा स्टूडेंट्स. पोरिफेरा ना स्टूडेंट्स, इस पोरिफेरा के अंदर ना स्टूडेंट्स, इस पोरिफेरा के अंदर कैन वी सी सम पोर्स? स्टूडेंट्स पोर क्या है? पोर मतलब क्या है? पोर मतलब छेद, है ना? छेद है इसके अंदर, दिख रहा है स्टूडेंट्स यहां पर? पोर बेरिंग. सो फाइलम पोरी. पोरी मींस व्हाट? पोर. सो दे हैव पोर्स इनसाइड एवरीवेयर. पोर्स इनसाइड. ठीक है, यहां पर बहुत सारे पोर्स दिख रहे हैं ना. सो दे आर पोर बेरिंग. दे आर व्हाट? पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स. पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ दे आर मोस्टली मराइन. मराइन मतलब क्या स्टूडेंट्स? दे आर प्रेजेंट इन वाटर. पानी के अंदर होते हैं. Now students, most of them are present in the sea water, but some examples are your fresh water also. Now students, can anyone tell me which is the fresh water? नहीं, फाइंडिंग नीमो वाला आएगा स्टूडेंट्स. फाइंडिंग नीमो वाला आएगा आज. फाइंडिंग नीमो वाला सी एनिमोन ना, सी एनिमोन को दिखाएंगे आज भी. ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू, पोर पता है ना? पोर मतलब क्या है? छेद है स्टूडेंट्स. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, which one do you think is your fresh water here? स्टूडेंट्स fresh water is spongilla. Spongilia, right, is your fresh water one. Remaining most of them are marine nature. Marine, or they are mostly sea water. They are mostly sea water in nature. Okay students? Now all of you, they are sedentary. Now what is the meaning of sedentary students? The meaning of sedentary means they are sessile. That is, they are attached to a substratum. देखा है स्टूडेंट्स? ये पूरा स्पॉन्ज है ना, इस ग्राउंड पे अटैच हो गया पूरा का पूरा. दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर. दे आर स्टक समथिंग लाइक दिस. दे पानी आएगा, दे विल मूव लाइक दिस. दैट्स ऑल. दे आर ससाइल. इट मींस दे आर स्टक टू अ ग्राउंड, स्टक टू अ सबस्ट्रेटम. दे विल नॉट मूव. दे विल नॉट मूव. ओके, एंड दे आर आल्सो एसिमेट्रिकल स्टूडेंट्स. मतलब क्या स्टूडेंट्स? एसिमेट्रिकल मतलब माने यू कैन नॉट डिवाइड देम इन एनी प्लेन. उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते. उसको डिवाइड नहीं करते स्टूडेंट्स, डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है? दे आर प्रिमेटिव माने बहुत ओल्ड है, स्टार्टिंग है. प्रिमेटिव, कुछ ब्रेन नहीं है इसके अंदर स्टूडेंट्स. एंड शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स ये पॉइंट हमने पहले पढ़ा था. ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने पहले पढ़ा है हमने. ठीक है स्टूडेंट्स? पहले पढ़ लिया अभी. नाउ अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. ऑल ऑफ यू सी, दे आर एनिमल्स. वी आर एनिमल्स. दे आर एनिमल्स. हम दोनों एनिमल्स हैं, है ना? पर we have mouth, we have anus, so we are complete digestion, right? But yeah students, how do you think they feed? If sponges are animals, how do they feed? वो खाना कैसे खाते हैं? इसके पास हाथ नहीं है खाना खाने के लिए. हाथ तो नहीं है इसके पास ना. So how do they feed students? How do they feed? Anyone students? Anyone? Think. Anyone students? If you have learned this chapter, you can answer this question easily. How do they eat? How do they release waste? Students, how do they release waste? How do they, which also helps in reproduction? Students, let me tell you. Students, इसके पास है students water canal system. It has something called as water canal system. Okay, students, इस तरह से देखो यहाँ दिख रहा है. This right here is a sponge example. इस sponge पे आपको दिख रहा होगा हर जगह छेद है. यहाँ पर छेद है ना, छेद. This is called as ostia. The small hole is called as what? Ostia. इसके पास ऑस्टिया है हर जगह, ऑस्टिया. और यहां पर एक बड़ा सा माउथ और ओपनिंग. द माउथ और द ओपनिंग इज कॉल्ड एज योर ऑस्कुलम. ऑस्कुलम इज द माउथ ओपनिंग. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग स्पेशल. नाउ ये काम कैसे करता है? स्टूडेंट्स ये काम कैसे करता है समझो स्टूडेंट्स इसको. ओके, नाउ ऑस्कुलम इज द ओपनिंग हियर. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ हाउ डू दे फीड? स्टूडेंट्स नाउ आई विल टीच यू. दिस इज द स्ट्रक्चर. So this is very important. Understand this very well understood. Understand. Students, it's clear to all of you. दिख रहा है diagram? दिख रहा है ना? Students, दिख रहा है diagram? All of you, diagram दिख रहा है? दिख रहा है ना? All of you. Okay. Now I want all of you to understand. I think I have a better diagram here. Students, एक second. एक second students. दिख रहा है diagram? दिख रहा है ना सबको? Students, दिखाई दे रहा है? All of you. All दिख रहा है ना डायग्राम? ठीक है. Now students, now let's say this is the sponge right now.
ओके, दिस इज अ स्पॉन्ज। नाउ इस स्पॉन्ज के अंदर एक कैविटी है, सीलोम नहीं, सीलोम नहीं है यहां पर, देयर इज अ कैविटी ऑन द इनसाइड। ओके, दिस इज द कैविटी ऑन द इनसाइड। नाउ स्टूडेंट्स, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज योर स्पॉन्जोसील। इट्स कॉल्ड एज व्हाट? स्पॉन्जो, राइट, स्पॉन्जोसील। सील माने कैविटी, तो स्पॉन्ज का कैविटी है अंदर ये, दिस इज द इनर कैविटी, स्पॉन्जोसील, राइट। इस स्पॉन्जोसील के बॉर्डर पे ना देयर आर स्पेशल कॉलर सेल्स हियर। इस स्पॉन्जोसील के इस पे बॉर्डर पे, बॉर्डर के अंदर थोड़े सेल्स लगे हुए हैं, सेल्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज क्वानोसाइट्स, दे आर कॉल्ड एज क्वानोसाइट्स। सो इस स्पॉन्जोसील के अंदर देयर आर मल्टीपल्स, दिख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, उतना याद है मेरे को, यू कैन सी मल्टीपल सेल्स इनसाइड, दे आर कॉल्ड एज क्वानोसाइट्स। They are called as what? Quanocytes. These are called as quanocytes. This internal part is called as what? Spongocoel. Now students, इस spongocoel के अंदर ये है हमारा quanocytes. Now students, these quanocytes are very special. Why? Because this quanocytes have something called as flagella. Okay students, flagella. Now अभी students try to imagine, इसके पास यहाँ पर इस कॉर्नर पे ना एक छेद है यहाँ पर. See, it is called as porifera because it has pores inside. It has pores. Now there are some special spores called as ostia. Okay, इस ostia से ना पानी अंदर की तरफ जाएगा, यहां पर पानी अंदर की तरफ जाएगा, इस तरह से पानी अंदर की तरफ जाएगा, इससे अंदर की तरफ जाएगा. Now once water is inside, अगर अंदर पानी चला गया स्टूडेंट्स, पानी अंदर चला गया ना, you have to push the water. Yes or no? Nematocytes are next. Nematocytes will not come here. Nematocytes will come next one. Nematocytes will come in the next phylum. Wait. Okay. So अगर पानी अंदर चला गया स्टूडेंट्स, अगर थिंक करो, बोट है ना, बोट, इट हैज ओर, वी कैन यूज द ओर टू मूव द बोट. यस और नो? अगर पानी है ना, यू कैन मूव द एंटायर वाटर विद द हेल्प ऑफ बोट विद द ओर. नाउ ट्राई टू इमेजिन सेम वे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज योर क्वानोसाइट्स हियर इनसाइड. क्वानोसाइट्स, these quanocytes have something called as flagella. इस flagella की मदद से ना all the water is being pushed up through an opening called as osculum. This opening is called as what? Osculum. So osculum से बाहर निकल रहा है सारा का सारा पानी. ठीक है ना स्टूडेंट्स, बाहर से निकल रहा है. स्टूडेंट समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? With the help of ostia, water is entering inside. उस पानी के साथ it can also bring food item also. हाँ. So with the help of ostia, it can food can also enter inside. अब यहां पर अंदर की तरफ फूड एंटर करेगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वानोसाइट्स. इस क्वानो के साइट्स हैज फ्लैजेला. दिस फ्लैजेला विल मूव ऑल द वाटर आउट ऑफ द स्पॉन्ज थ्रू ऑस्कुलम और द माउथ. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज द एंटायर योर स्पॉन्जेस. सो देखो ये वाला, दिस इज द क्वानोसाइट्स. ओके, व्हाट इज द फंक्शन? जनरेट वाटर करंट. दे विल मेक श्योर वाटर इज फ्लोइंग आउट थ्रू द ओपनिंग, माउथ है ना, ओपनिंग ऑस्कुलम से, टू कैप्चर स्मॉल फूड आइटम. अगर उस पानी से ना, इफ द फूड इज ऑल्सो एंटरिंग इनसाइड, सो ये फ्लैजेला क्या करेगा? उसको ट्रैप करेगा, फूड को ट्रैप भी करेगा. अमीबोसाइट्स डाइजेस्ट द फूड. देखा स्टूडेंट्स, यहां पर है हमारा क्वानोसाइट. इस क्वानोसाइट के पीछे है अमीबोसाइट. दिस अमीबोसाइट्स विल डाइजेस्ट द फूड. सो क्वानोसाइट्स, अमीबोसाइट्स. क्वानोसाइट्स विल हेल्प इन मूविंग द वाटर. Amoebocytes will digest the food item. Okay students, digestion is intracellular. Students, what is the meaning of intracellular? The meaning of intracellular is within the cell. So सारा का सारा खाना पानी सब कुछ digestion is happening inside a cell. Intracellular. Now what is intercellular or extracellular? Outside the cell. We are extra students, we are extracellular because we have stomach, right? Where the digestion, we have stomach and everything. We're extracellular. So these are intracellular. So amoebocytes will digest, quanocytes will help in movement. These are called as quanocytes. Students, where are the quanocytes present? Quanocytes are present on the spongocoel. The mineral part is called as spongocoel. ठीक है, वाटर फ्लो करेगा स्टूडेंट. ये देखो, और एक डायग्राम देखो यहाँ पर स्टूडेंट, और एक डायग्राम आपके लिए. Okay, it also helps in exchange of gases, also helps in elimination of waste. दिख रहा है यहाँ पर? This is called as ostia. यहाँ पर है ostia. ऑस्टिया से पानी अंदर की तरफ आएगा. पानी अंदर की तरफ आने के बाद क्वानोसाइट्स विल मूव द वाटर विद हेल्प ऑफ फ्लैजेला एंड ऑल द वाटर विल गो आउट थ्रू ऑस्कुलम. वाटर विल मूव आउट एंड आल्सो
उसका वेस्ट सब कुछ रिमूव हो जाएगा बाहर की तरफ. Beautiful students, beautiful. Now a question to all of you students. A question to all of you. All of you. See, all of you noticed. See, plants. Students, can the plants move? Students, can the plants show locomotion? All of you. Can the plants show locomotion? All of you. No. So when the plants can't show locomotion, they have to protect themselves, right? Plants have to protect themselves. Now how do plants protect? Students, आपने अगर कभी रोज को निकालने के लिए ट्राई किया ना, रोज प्लांट, what do you find in rose plants? Students, what do you find on rose plants? You find something for protection? No, you find something called as spines. They're technically not spines, they're thorns. They're thorns, not spine. Spine and thorn are different. Spine is a leaf modification, thorn is a stem modification or axillary bud modification. That is a next level botany. कभी पढ़ाऊंगा आपको मैं botany भी, ठीक है? So thorns are there, right? Thorns will help in protecting the rose plant. So just like thorn, in the case of porifera sponges, it has something for protection also. Students, so if sponges cannot move, they are sessile in nature. How do they protect themselves? With the help of spicules. Spicules, which are basically the skeleton there. Skeleton. Spicules are present here. Spicules. Spongin fiber. They are made up of spongin fiber and spicules. Spicules are present here. These are spicules. So they will help in protecting the plant. So not protecting the sponges. Okay? So they help in protection here. Protection. Spicules. So we have spicules. We have choanocytes. Spongocele. Water is entering inside, going out of osculum here. Students, समझ आ रहा है सबको? Students, how beautiful this organism is. Now they show both asexual and sexual. Both reproduction is seen here, students. Asexual by fragmentation can be seen here. Sexual reproduction by egg and sperm fusion can be seen here, students. Okay, so that is your entire. So that is your entire porifera. They can be used to as a scrubbing also. They can use to scrub also. We can use them to use the scrub also. Scrub. Commercially for bathing and exfoliation. Used as cleaning aid to clean surfaces, sponges. So with that, porifera is over. Students, यहाँ पर याद क्या रखना पता है? Sponges, reproduction, structure, they are diploblastic in nature, right? They are cellular level of organization. उसके बाद water कैसे enter हो रहा है? उतना स्टूडेंट्स उतना ही टॉपिक है ये, इतना ही टॉपिक है. इसके बाद हेड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है. Okay, so let me just recollect everything what we learned right now. We'll go to the next phylum eventually, students. हमने देखा ये इस तरह से दिखते हैं. They're called as porifera because they have pores inside. Pores, दिख रहा है pores. We have two examples here, spongilla and cycon, right? They show cellular level. They have water canal system. So दिख रहा है ostium और pore. यहाँ पर pore है और यहाँ से अंदर से बाहर निकलेंगे. Through osculum, the water will enter inside. Inside we have canal system. This is the canal system, students. Okay, water enters through the ostia. Ostulum is singular. From ostia, water enters to the central cavity called as your spongocele, is the center cavity. Water leaves the organism through osculum, that is the outer mouth. This is the pathway to collect food. देखो, ostia, spongocele, osculum, and the cell which is helping is called as choanocytes. These choanocytes also have something called as your amoebocytes, which also helps in digestion. Students, इसके बाद कुछ भी doubt है जल्दी बताओ students. All of you. Students, or exactly. It is used for bathing. Students, देख रहे हो इसका lifespan. इसका like it is the animal and all. We're using for taking bath. Students, any doubt right now? Students, any doubt right now in porifera? Done, students. Now, next phylum is called as Coelenterata, also called as Cnidaria. It is called as Cnidaria because of cnidoblast cells or cnidocyte. Now, what is a cnidocyte? What is a cnidoblast cell? I'll teach you right now. Okay, students. So next particular phylum is called as Coelenterata or Cnidaria. It's same thing, other name for it. Students, can we start? All of you. Students, can we start? Next topic, next phylum, second phylum. So students, in this class I'll be teaching you 3 phylum. Next class I'll be teaching you 4 phylum. ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग के phylum में थोड़ा concepts हैं. उसके बाद सारे phylum छोटे-छोटे हैं. ठीक है? Now students, can we start? Okay students, now these are the examples of
Cnidaria. Follow phylum Cnidaria Coelenterata. देखो sea pen is called a sea pen. It is called a sea fan. Students मेरे पास था पहले ये sea fan, घूम हो गया, पता नहीं कहां पर चला गया. Then we have brain coral. Students यहीं पर हमारा फाइंडिंग नीमो यहीं पर आता है. फाइंडिंग नीमो, ठीक है स्टूडेंट्स. फाइंडिंग नेबर यहीं पर आता है, फाइंडिंग नीमो वाला. स्टूडेंट्स देखो यहां पर हाइड्रा. स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा ना हाइड्रा के बारे में. स्टूडेंट्स all of you have learned something called as budding in hydra. Students all of you heard. Students all of you heard, right? Budding in hydra. Same, hydra is here. The, right, Portuguese man of war, jellyfish. Students jellyfish also comes here in your Coelenterata. Okay students, Cnidaria Coelenterata. So they are mostly marine in nature, mostly marine. The sea anemone है ना, यही है हमारा. Students sea anemone, finding Nemo वाला. Students finding Nemo, this is the one. Sea anemone, it belongs to Coelenterata. Okay students, it belongs to Coelenterata. Okay, mostly aquatic in nature. Students jellyfish, hydra सब कुछ यहीं पर आएगा. Students they can be sessile or they can be free living. Sessile are also called, students sessile are also, they are stagnant one place में, एक ही place पे होंगे. They are also called as polymorphic in nature. They have two types of phases. Medusa phase. I'll teach you what is Medusa. Polyp and Medusa phase as there. What is polyp? What is Medusa? I'll teach students. Okay, students free living. They are radial symmetrical. Body can be divided into two equal halves. Radial symmetrical. Students they exhibit tissue level. Students Cnidaria and Ctenophora, Coelenterata, Cnidaria and Ctenophora are tissue level. Cell level is Porifera. Students याद रहेगा ना इतना, याद रहेगा ना इतना. Students they exhibit tissue level organization. Tissues are organized. Okay, organ नहीं है यहाँ पर, organ system नहीं है यहाँ पर, ठीक है. Now they are also diploblastic. मतलब क्या है diploblastic? मतलब they have ectoderm and endoderm. Students do you find mesoderm here? No, we don't find mesoderm. Students mesoderm is not found here. Mesoderm is undifferentiated, called as mesoglia. Mesoglia is the middle layer. The mesoderm is not differentiated here. So if mesoderm is not differentiated, students, do you find coelom here? Students, do you find coelom here? All of you. If mesoderm is not present, it is not differentiated, do you find coelom here? Coelom. All of you. Do you find coelom here? No, we don't find coelom here. No, coelom is absent here. Okay, coelom is completely absent, students, absent. Now this is the structure of your entire hydra. This I will teach you detail in the next slide, students. Okay, students, देख रहे हो? This is the hydra. It's called as polyp form. Polyp form. Here you can see the tentacles. Tentacles are something called as nidocyte or nidoblast. That is why it's called as Cnidaria also. Okay, wait for I'll teach you that one. We'll go. Now, students, इसका एक animation था. I'll show you the animation. I'll show you the animation right now. बहुत अच्छा animation. Oh, students, animation नहीं दिखा सकता. Students, I didn't get the PPT. Students, can you give me exactly 2 minutes? I'll bring the PPT. All of you, can you give me exactly 2 minutes? Because this animation is very nice. This animation will show you how the Cnidaria actually functions. ये Cnidaria का function कैसा है? Just give me 2 minutes. I'll just upload the PPT. ठीक है students? Give me 2 minutes. All of you, give me 2 minutes. This is amazing. Okay.
एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड आ जाएगा। कहाँ गया हमारा पीपीटी? एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। लोड हो रहा है, एक मिनट स्टूडेंट, लोड हो रहा है। स्टूडेंट्स बोर्ड दिख रहा है सबको? स्टूडेंट्स बोर्ड दिख रहा है सबको? देखो स्टूडेंट्स, crazy, you'll properly understand the concept right now. ठीक है now students, now this is a medusopoliform. Now these are called as your nidoblast cells. Nidoblast cells, ये नीडो, अगर ये फिश इसके पास जाएगा ना, यहां से एक टेंटिकल बाहर निकल के आएगा और उसको पिंच कर देगा, नीडल लाइक, इट्स कॉल्ड एज लासो। लासो निकल के बाहर इसको पूछेगा, दिस विल, इट विल डाई, इट विल इवेंचुअली गेट स्टन। ओके, नाउ दीस सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पर दिखा देता हूं, रुको स्टूडेंट्स एक सेकंड रुको। स्टूडेंट्स सी दिस इज योर हाइड्रा। सबको पता हाइड्रा मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हाइड्रा मतलब क्या है? इस हाइड्रा का जो टेंटिकल्स है ना, टेंटिकल्स, उस टेंटिकल्स के सरफेस के ऊपर, इट इज आल्सो फाउंड इन बॉडी आल्सो, दिस इज द पॉलीफॉर्म। इसकी टेंटिकल्स के ऊपर देयर आर स्मॉल स्मॉल सेल्स हियर, द ब्लू कलर सेल्स। Now these small blue color cells are your specialized cells students. They are called as nidoblast cells or nidocyte. This entire thing is called as a nidoblast cell. Nidoblast cell. Okay? Nidoblast. That is why it's called as Cnidaria also. It is also called as Cnidaria. This is nidoblast cell. Entire cell is called nidoblast cell. इस nidoblast cell के अंदर की तरफ ना, there is something called as nematocyte capsule. ये वाला अंदर की तरफ स्टूडेंट्स दिख रहा है, ये वाला नेमेटोसाइट कैप्सूल हियर। सी दिस इज कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट। यहां पर ट्रिगर है स्टूडेंट, ट्रिगर है। अगर लेट्स से कोई मछली यहां पर आ गई, यहां पर कोई मछली आ गई, ठीक है, मछली, if this fish touches the trigger, what happens inside the students, inside the nematocyte, ये जो दिख रहा है यहां पर, तो कॉइल होकर रखा है ना, ये लासो, ये लासो बाहर निकल के आ जाएगा, इससे बाहर निकल के आके ना इस फिश को चुप जाएगा, यहां से चुप जाएगा। सो बेसिकली इट हैज, स्टूडेंट्स ट्राई टू इमेजिन, अगर आप तुम देखा है ना बैटमैन देखा स्टूडेंट्स, पता है बैटमैन हैज दैट ग्रैपलिंग हुक, देखा है ग्रैपलिंग हुक, वो शूट करता है ग्रैपलिंग हुक को, उसके बाद वहां से स्विंग करता है, उसी मैकेनिज्म के ना, इट हैज अ गन हियर, ट्राई टू इमेजिन इट हैज अ गन हियर। ओके, एनीथिंग व्हिच कम्स क्लोजेस्ट इट विल शूट, यहां से शूट कर देगा पूरा। एंड फ्रॉम this cell capsule called as nematocyst capsule here, this particular thread also called as lasso will go up and will sting, lasso will go up and will sting soon. Okay, so नहीं देखा स्टूडेंट्स, हमने सर हमें दिखवा स्टूडेंट समझ आ रहा है सबको ना? This entire cell is called as nidoblast cell. Entire cell is called as nidoblast cell. इस nidoblast cell से ना, inside the cell we have nematocyst capsule. इसके अंदर है टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन हाइपोटॉक्सिन, right, armed with specialized cells called as nidoblast cell which contains hypnotoxin. और जिस nematocyst से ना ये थ्रेड निकल के बाहर आएगा, ऐसे निकल के आएगा स्टूडेंट्स। ये देखो यहां पर दिख रहा है स्टूडेंट, एक मिनट, अभी देखो यहां पर एनिमेशन देखो और एक बार समझ आएगा। सी दिस इज कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट सेल। फिश उसके पास गया, नीडोब्लास्ट सेल से इस कैप्सूल ट्रिगर निकल गया और यहां से स्टिंग हो गया। ओके, सो दैट इज व्हाट हैपेंस स्टूडेंट, दैट इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ योर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सीलेंट्रेटा और निडेरिया स्टूडेंट्स। ओके, यहां पर देखो, हाँ ये वाला देखो स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स यहां पर दिख रहा है, सी इस मांस बाहर निकलेगा और शूट करेगा सबको।
So this is the nidoblast cell. It has the capsid, nematocyst, वहां से निकल के आएगा बाहर ऐसे. Let's say ये हमारा ह्यूमन स्किन है, अगर हम जेलीफिश को टच करेंगे, अगर हम कभी जाके जेलीफिश को टच करेंगे ना, उसके टेंटिकल्स के अंदर क्या होता है? नीडोब्लास्ट सेल. उस नीडोब्लास्ट सेल के अंदर है नेमेटोसिस्ट. वहां से ये अंदर की तरफ निकलेगा, बाहर निकल के हमको स्टिंग करेगा ऐसे, स्टिंगिंग थ्रेड. But students, it also helps in offense and defense. It helps in feeding also. It helps in anchorage also. It helps in anchorage also, students. Anchorage also. Crazy, no students? Crazy. And students, we have two types here. We have two types. Okay, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के यहाँ पर है, देखो. This is your sessile one. Your hydra is also sessile. It also called as polyp, sessile. And this is called as jellyfish, right? Aurelia, right? Jellyfish. It's umbrella-like structure. This one is your Aurelia. So there are two types. We have two types of it. Okay, students? Now, students, helps in feeding, anchorage, offense and defense. Nidoblast, ये याद रखो students. इसको याद रखो. Nidoblast cells. It is found in the case of Cnidaria. Nidoblast. Now, digestion system is incomplete. Students, इसका मतलब क्या है? All of you students, all of you, tell me what is the meaning of incomplete digestion? इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग है, यहाँ पर एक ही ओपनिंग that acts as a anus and mouth both. एक ही ओपनिंग है, same like porifera, एक ही ओपनिंग है यहाँ पर. Digestion is incomplete, students, incomplete here. Okay, so it has a cavity in the middle called as gastrovascular cavity. Here we have the epidermis, that is the outer, right? Mesoglia, obviously because it is diploblastic in nature. So mesoglia is present here. There is no coelom here, no coelom. Tentacles, mouth. Okay, students. Posterior. Okay. Now, students, now postome. Students, here one topic is missing. This here, दिख रहा है यहाँ पर. This is called as pedestal here. This is called hypostome also. Hypostome. It is called as hypostome. यहाँ पर दिख रहा है. उस hypostome के ऊपर mouth होता है. ठीक है? Now, students, they show alternation generation. That is, they show metagenesis. Now, what is the meaning of metagenesis? Metagenesis is that the sessile ones can become motile. जो stationary है ना, it can change to the free floating one also. Okay, that is, students, see this. Medusa forms polyp, so they can interchange basically. One second. Polyp can become Medusa. So polyp can become Medusa by asexual actually. Asexual, but Medusa back to polyp is sexual. Sexual reproduction. So polyp to Medusa is asexual. Students, how can you remember this? यहाँ पर S है ना, Medusa S. So it undergoes sexual reproduction. So Medusa can become through sexual reproduction. It can become polyp. Polyp through asexual reproduction, it can become Medusa. Polyp to Medusa is asexual. Medusa undergoes sexual reproduction. इतना याद रखो students, काफी है. How they can interchange also, students. They can interchange like this. They can interchange also. They can interchange, students. Okay. So even corals also, right? Corals also present. Coral reefs. Okay. Students, here is all the characters here. Tissue level we can see radial symmetry, diploblastic, nidoblast. There, coral secrete calcium. So all of you know corals, right? Corals. देखा students, corals, coral reef, right? Corals will have calcium carbonate, which basically make the hard shell. They make the hard shell. Some organisms exist both as polyp and Medusa also, and hermaphrodite. It means male and female is present in one organism only. There is no separate male and female here. Okay. Polyp is generally sessile, stuck to one place. Medusa can float around. Medusa. Students. Okay. So if you want to see the comparison, students, porifera, symmetry, there is no symmetry, students, here. Students, I hope it is visible to all of you. Students, I hope it is visible to all of you. Students, is it visible? Visible? See, no symmetry here, radial symmetry. Segmentation, no. Digestive tract, no. So both of them are incomplete digestion. Porous attachment to the rocks, filter feeder, that is cavity is there.
Stinging cells are present here, students. Stinging cells are also called as your nematocyst, right? Nematocyst. Okay, nematocyst. Okay, students. Then your tentacles here. Now, अभी हमने फिनिश किया Porifera, Coelenterata, also known as Cnidaria. अभी आज की क्लास में हम टीनोफोरा तक पढ़ेंगे, अभी टीनोफोरा तक. नेक्स्ट क्लास में प्लाटीहेलमिन्थस, एस्कीहेलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, ये चारों के चारों नेक्स्ट क्लास में. All four in the next class. Okay, students. Students, oxosomes also called as your F0, F1 particle. It is also called as ATP synthase in mitochondria context. देखा है ना, mitochondria has something called as your bat-like structure which helps in ATP synthesis, ATP synthase, also called as F1, F0, F0 particle, elementary particle. Okay, that is different. So you might be, are you talking about that oxosomes or different oxosomes? Let's see. Okay, so आज क्लास में स्टूडेंट्स लास्ट इज टीनोफोरा राइट नाउ. लास्ट इज टीनोफोरा राइट नाउ. टीनोफोरा स्टूडेंट, टीनोफोरा बहुत ही छोटा है. ओके, बहुत उतना काम नहीं है स्टूडेंट्स. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ characters of Ctenophora. Ctenophora is very tiny. Understand students? Exclusively marine. There are very few phylum, Acandermata, right? Very few phylum which are exclusive marine. यहाँ पर fresh water ही नहीं है. Fresh water नहीं है यहाँ पर. Exclusive marine. Okay, and swim freely. Bioluminescence. Now students, what is the meaning of bioluminescence? They are very bright. They can show color. They glow in dark. Okay, bioluminescence, property of living organisms to emit light. Okay, that is Pleurobrachia and Ctenophora, right? Ctenoplana. I think I have a video for this. Let me just show you, students. If I have video for this, एक second students, एक second. इसका video है, बहुत अच्छा है. Oh हो students, ये देखो students, ये देखो. These are your, right? This right here is your Ctenophora. So दिख रहा है Ctenophora? Students, look at the Ctenophora. It has comb plates, 8 comb plates. 8 different comb plates are there. It is bioluminescence in nature. Okay, Ctenophora. Okay, they don't have need, right? See students, look at Pleurobrachia. So beautiful, right? Look at this. These are called as comb plates. These are called as 8 comb plates. It also can has 2 tentacles also. 2 tentacles can be present. Comb plates. They're like brush. Brush पता है, brush. So it is like brush here. Bristles are present of cilia. बहुत beautiful student, बहुत beautiful है. बहुत ही beautiful है. ये देखो students. See, exclusive marine, they are radially symmetrical. Any radio can divide them because it's almost circle type. No, beautiful they are, students. Beautiful they are. Okay. The tissue level organization and diploblastic. Again, students, if they are diploblastic in nature, do they find coelom, students? Do you find coelom? What is brush? Students, brush नहीं पता आपको? Brush करते हो ना, brush. Now brush has the bristles, no? Bristles. Just like bristles यहाँ पर होंगे, bristles. Small tiny bristles are present. Okay, so they doesn't have any diploblastic in nature. It is diploblastic in nature, so there is no coelom here. No coelom. Okay, no coelom, student. No coelom. No coelom. Now, student, look at this. Look at this. This is how it looks like. It looks like a round football. Round football has 2 tentacles like this. 2 tentacles. Okay, it has 8 external rows of ciliated comb plates. See, दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? एक मिनट, यहाँ पर दिख रहा होगा. We'll zoom it here. Students, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको. These are called as comb plates. दिख रहा है? Line. Ciliated comb plate. 8 are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 comb plates are present here. 8 comb plates. This is how it looks like. See, यहाँ पर दिख रहा है? Ciliated. This is cilia. Students, obviously. Now all of you tell me, students, if they have cilia, will it help in movement? All of you tell me, students, if they have cilia, students, all of you know cilia and flagella.
Students, if they have cilia, what do you think is the function of this comb plates? Comb plates help in movement. Okay, so with the help of these comb plates, it can move around. It can move around. Okay, students. Okay, they're called as comb jellies also. Sea walnut or comb jellies, whatever you call it. Sea walnut or comb jellies. Okay, comb jelly, students. You will dikh rahi hai students. This is not there, don't worry. This is feeding. Okay, the students, what reproduction? Again, students, crazy it is. Exclusively marine, only sexual. Students, generally what happens is when we go to higher phylum, there we find only sexual. But generally lower forms, right? Lower forms will show both. But this person is like very, I'm like, I don't care if I'm lower form. I do not care if I'm lower form. I will still only show sexual reproduction. So बहुत जिद्दी है ये, बहुत जिद्दी है. Whatever happens is like I will only show sexual reproduction. Whatever happens, even I may be low life, I may be lower form of organism, but I will show only sexual reproduction. Okay, sexes are not separate here. Okay, now they function both as male and female, right? Hermaphrodite, not separated here. Sexes are not separated. Hermaphrodite is seen both male and female. External fertilization is seen here. Inter development, it is fertilized egg develop into through a larval stage, hatches into adult. So there is larva stage, develop into adult stage. Okay, students, if these are the all the information, presence of 8 ciliated comb plates, tissue level, diploblastic, radial symmetry, bioluminescence, hermaphrodite. Hermaphrodite, students, hermaphrodite. Students, yeah, here is a side by side comparison also. Ctenophora and Cnidaria or Coelenterata. Both marine and freshwater, only marine. Highly diverse, less diverse. Radial. Presence of nidoblast, no nidoblast here. Extracellular and intracellular both. Right? Incomplete digestion, complete digestion again. Students, next level this is Ctenophora. It may be tiny, but it has next level, students. यहाँ पर मैंने students examples नहीं दिखाए. Let me just show you some examples. We'll see your NCERT. Yes, students. This is what we learned yesterday's class. This is what we learned today. Entire thing. Students, ये देखो. Porifera. दिख रहा है? Sycon. Euspongia. This is one which is used for bath करने के लिए, students. To take bath. This is Euspongia. This is Spongilla, freshwater one. Spongilia. It has this extra structure. Can you see? There's spicules. Okay. Students, see this. This is your Medusa one. Medusa, free floating one. Medusa. Okay. यहाँ पर दिख रहा है ये वाला पॉलिप फॉर्म, अडामसिया. यहाँ पर दिया है अडामसिया, दिया है पॉलिप फॉर्म. हाइड्रा आल्सो इज पॉलिप फॉर्म. स्टूडेंट्स. ओके. नीडोब्लास्ट दिख रहा है यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ये वाला, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर. दिस इज नीडोब्लास्ट हियर एंड दिस इज द नेमेटोसाइट कैविटी. इस कैविटी से थ्रेड निकल के बाहर आएगा बाहर. ओके. हाइपोस्टोम इज द एंटायर, यहाँ पर नहीं दिखा स्टूडेंट, नहीं दिखाया है हाइपोस्टोम. हाइपोस्टोम इज अ स्ट्रक्चर ऑन द टॉप. हाइड्रा को दिखाए ना, हाइड्रा के ऊपर हाइपोस्टोम के ऊपर हमारा माउथ होता है, माउथ. ओके. स्टूडेंट्स, Cnidaria, tissue level, they have a gastrovascular cavity on the inside, single opening, means incomplete digestion. Mouth on hypostome. Hypostome is the pedestal. स्टूडेंट देखो एक कैविटी इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, नोट्स मिलेगा, डोंट सी लाइक दैट. No, they come from 11th and 12th biology. They come from 11th and 12th biology questions, 11th and 12th. Okay, students, what is metagenesis? They can change from polyp to medusa, medusa to polyp. Polyp to medusa is asexual, medusa to polyp is sexual. Okay. Physalia, right? That is Portuguese man of steel. Adamsia, sea anemone, right? Pen, sea pen. Peninsula, Gorgan, right? Gorgania, that is sea fan. Meandrina, that is brain coral. This is your Ctenophora. देख रहे हैं यहाँ पर 8 comb plates, 1 2 3 4 5 6 7 8 comb plates here.
ciliated comb plates. They are what? Ciliated comb plates are here. Ciliated comb plates. और यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये वाले, these are the tentacles here. Okay. Bioluminescence, 8 comb plates are there. Digestion is both extracellular and intracellular digestion. Okay. Only sexual students, only sexual reproduction here. Students crazy. Next class में पढ़ेंगे Platyhelminthes, छोटा स्टूडेंट, बहुत इतना सही है. Platyhelminthes, Aschelminthes, your roundworm. Then we learn Annelida and we will learn Arthropoda, the largest phylum Arthropoda. Next class में. उसके बाद last class we'll study Mollusca, Echinodermata, Hemichordata. Students, I think till here we can study next class. Next class I think we'll study till here. Right? Next class we can study till Hemichordata. Next class we'll study till Hemichordata. Okay. Students, next class we'll study till Hemichordata. We'll finish off till Hemichordata. Last class we'll keep only chordata. Last class we'll do only chordata separate. Okay. Students. Okay then students, bye bye all of you. I hope all of you enjoyed. Students. Okay. Students, I will give students. Don't tell like that. I will give students. I will give you notes. I have all the notes, students. Students, I will give. Okay, I will give you students. Don't worry. You can see my chat with my channel manager. I have given my notes. Right, my notes have been given. Okay, if you go check here also, I'll show you my notes here also. Wait. I always save your notes, but students, एक काम करते हैं रुको, एक और व्यवस्था करते हैं एक और. Students, दिख रहे हैं आपके? एक और व्यवस्था करते हैं भी students. यहाँ पर दिख रहे हैं notes. I will send this folder only. This is your Olympiad folder. Olympiad folder students. ठीक है? यहाँ पर है हमारा Olympiad folder. Animal Kingdom, Basic Genetics, Biomolecules Part 3, Biomolecules Part 2, Bioclassification, Biomolecules Part 1, Biomolecules Part 4, Cell Part 1, Part 2, Part 3, DNA, Genetic Material, Genetics Part 1, Part 2, Part 3, Glycolysis, Human Evolution, Reproduction 1, 2, 3, third missing students यहाँ पर. Human Reproduction Part 3 missing है क्या? वरना हमने 2 ही parts में किया था. Human Reproduction students यहाँ पर. Human Reproduction के part missing है. Human Reproduction का एक part. I'll find it. Oh, I did it from different studio. Okay. Kingdom Fungi, Photosynthesis, Part 1, Part 2, Plant Reproduction Part 4, Protista, Plant Reproduction 1, 2, Plant Reproduction Part 3, Living World, Viruses. Students, notes हैं कहीं पर नहीं गए students. मैंने delete नहीं किए notes को. Right? Delete मैंने किसी भी प्रकार के notes delete नहीं किया है. सारा का सारा notes है मेरे पास. Don't worry. Okay. दे दूंगा students. Okay. Students, I will teach you everything. इसके बाद entire animal kingdom के बाद ना, should we start plant physiology or should we start animal physiology students? Oh sorry, plant or human physiology? Which one students? Which one do you want to start? Let me know in the comment section. Let me know in the comment section which one do you want to start after animal kingdom, or do you want to do plant kingdom? So I'm an expert at plant kingdom. So if you want to learn from me plant kingdom, but plant kingdom I'll teach you in B2A. This week we did algae. Next week we'll do bryophytes. उसके बाद pteridophytes. वहां तक एग्जाम आ जाएगा. Okay students, I'll take more classes. Students, एक काम करते हैं. I will ask Nidhi ma'am for more classes because biology बहुत important है ना. Okay students, bye all of you, take care. अभी all of you chill करो. Notes मिलेंगे. So if you like the class, let me know in the comment section. अब comments ही नहीं करते. Everyone is telling me where is Basavaraj's comments. Basavaraj doesn't get any comments only. Okay, so let me know in the comment section how was the class. I also like the video also students. Okay, so bye all of you students, take care, have a great day ahead, and I will meet you in the next class students. Bye all of you. Boy.